हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पार्थ और आप देख रहे हैं चैनल कमांडर 99। सो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं गेटिंग ओवर इट विद बेनेट 40 एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गेम है। एंड ये मैं पीसी पर नहीं खेल रहा हूँ, ये मोबाइल वर्जन है। एंड गाइस, ये प्ले स्टोर पर 430 रुपीज़ का है, बट आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके एपीके को यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड बहुत ही मज़ेदार गेम है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सो गाइस, बेसिकली मैंने ये वीडियो मतलब ये जो रिकॉर्डिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने डाउनलोड करते ही जब खेली थी तभी की ये रिकॉर्डिंग है। मतलब इसमें मैं अभी सेंसिटिविटी चेक कर रहा था एंड अपने कंट्रोल देख रहा था कैसे करते हैं, कैसे खेलना है इस गेम को। एंड ये मैंने बहुत ज़्यादा स्किप करा है। मेरे को पहला पेड ये जो था, अभी इसको मैंने कंप्लीट करा 5 मिनट्स में एंड बहुत ही मुश्किल ही से करा यार। बहुत ज़्यादा पार्ट स्किप करा है एंड वो देखते तो यार बोर ही हो जाते, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। एंड यार इसमें मतलब आपको कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ ये हैमर को कंट्रोल करना है, बाकी आपका शरीर हैमर के हिसाब से चलेगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। एंड पीसी में भी शायद से ऐसा ही होता है, हमें सिर्फ हैमर को कंट्रोल करना होता है। एंड यहाँ पर हैमर को मैं मतलब कि घुमा रहा हूँ। हैमर का जो डंडा है उसको नहीं, सिर्फ जो स्टोन है सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। एंड उसी की तरह उसको कंट्रोल करने पर ये पूरी गेम चलती है। एंड गाइस, अब यहाँ पर अभी मेन जगह आ जाती है जहाँ से हमने ऊपर चढ़ना है माउंटेन के। एंड बहुत ही देर बाद मुझे समझ आया कि ये चढ़ेंगे कैसे। बहुत ही टाइम लगा मुझे समझने, मतलब स्टार्टिंग में तो सबके साथ यही होता है। आप स्ट्रीमर्स को भी देख रहे होगे जो अभी गेटिंग ओवर इट स्टार्ट कर चुके हैं, उनको भी मतलब कंट्रोल प्रेस आ रहा है यार। बिल्कुल भी स्पैम मत करो यार, खेल के देखो खुद एक बारी मोबाइल पे, तब समझ आएगा कि कितनी डिफ़िकल्ट गेम है। एंड जब ऊपर पहुंच जाते हैं तुम कंट्रोल प्लस आर कह देते हो। एंड बहुत ही ख़राब लगता है जब हम इतनी ऊपर मुश्किल से पहुंचते हैं एंड फिर स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. सो गाइस, अब जो इसने लाइन बोली है ना, ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। मतलब मैं गिरा था तो इतना गुस्सा नहीं चढ़ा, बट जो अब इसने ये वाली लाइन बोली, बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ कि ये मजाक उड़ा रहे यार, मतलब ऐसा लगता है। तो अब मोबाइल वर्जन में इसकी ये लाइन से बोलना ऑफ़ नहीं कर सकते, तो इसको झेलना पड़ता है। पीसी में तो हम कर भी सकते हैं इसको ऑफ। तो ये थोड़ा सा गलत है मोबाइल वर्जन के साथ।
Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. एंड अब गाइस मैं फाइनली यहाँ पर ऊपर पहुँच चुका था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बट अब आप देखना यार, मैं यहाँ से नीचे ऐसा गिरूँगा कि मतलब मैं क्या कहूँ यार, कुछ कहने लायक ही नहीं है। देखते जाओ बस। Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. सो गाइस, अब ये देख के अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलना। एंड जो ये कर रहा हूँ अभी मैं, ये इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन एंड रेज। सो अभी मैं शो तो नहीं कर सकता ऐसे, बट ऐसे ही शो करना पड़ रहा है। सो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।